Welcome to Healing Circle Talks. Before we begin the circle, please allow me to read the guidelines. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle confidential. We trust each one of us as guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. Thank you for joining in this space to create this healing space for each other, to give this comfort and care to everybody who is going through this journey. हम लोग हीलिंग सर्कल को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखेंगे एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस अमित शिनॉय सो प्लीज अलाउ मी टू share about the speaker. Amit Shinoy is an AML acute myeloid leukemia survivor. For him, initially there were no significant symptoms other than fatigue. One day, during his root canal treatment, bleeding started, and that too it was unstoppable bleeding. On further test, he was diagnosed with AML. He underwent 3 rounds of chemotherapy, radiation therapy, and allogenic stem cell transplant as a part of the treatment. Amit says, yes, there is a lot of fear, especially will you beat it or will you get succumbed to it? There is no right or wrong answer to this, but the key is to keep fighting until you succeed. Awareness is critical in wearing this fear off and gives the patient and caregiver hope. And hope is what we give to everybody who is going through this journey. And it's because once you have the awareness, जब आपको पता है कि आपको करना क्या है, जब आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है. आप अपनी चॉइसेस को लेकर के, अपने ट्रीटमेंट को लेकर के यू आर मोर एम्पावर्ड और यू आर मोर एजुकेटेड कि हाँ, मुझे एटलीस्ट पता है कि हम कैंसर हुआ और अब मुझे उसके लिए क्या क्या करना चाहिए. एंड अमित हैज़ गॉन थ्रू द सिमिलर जर्नी एंड आई एम श्योर अमित आपकी जर्नी से पीपल विल गेट मोर डायरेक्शन, मोर अवेयरनेस कि इस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए. आई नो देयर आर मेनी पीपल करंटली who are going through bone marrow transplant, who are going through blood cancer treatment, and different doctors give them different choices. और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अपने आप से डिसाइड करना कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है. एंड देयर इज़ नो, एज यू सेड, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस. वन ऑफ आवर वेरी क्लोज फ्रेंड, कम्युनिटी मेंबर दिव्या, शी इज़ राइट नाउ गोइंग थ्रू इट एंड बैटलिंग बिटवीन द सेम चॉइसेस कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. हर डॉक्टर अलग अलग आंसर्स बोलते हैं. So I'm sure stories like yours and many others who have been on this platform, it really gives them a direction, it gives them a hope, it gives them a sense of belongingness that we are not alone and somebody has gone through it already. अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं. So thank you so much Amit for joining us on this platform in Healing Circle Talks to spread the same awareness, to share your experience so that others can also learn from it. So would like to hear from you about your journey. Thank you. Thanks a lot, Dimple, for the kind introduction. My journey actually started with a bite of a peach. So I had gone for a hospital auditing round, and घर आते ही मैंने बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं I had bit into a peach very hurriedly. My tooth broke, the front tooth broke, and I had to rush myself to a doctor to get it treated. So डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि रूट कैनल ट्रीटमेंट बेटर रहेगा आपके लिए. तो रूट कैनल ट्रीटमेंट के लिए वगैरह ड्रिल वगैरह किया उन्होंने, दांत चिप वगैरह करके ड्रिल जो करना पड़ता है. सो ड्रिल करने के बाद भी जो ब्लड अमाउंट बाहर ब्लड आया मेरा, वो रुक ही नहीं रहा था. बिकॉज इंस्टेड ऑफ पुटिंग कॉटन एंड जो भी इनका पेस्ट रहता है स्टॉप करने के लिए, वो रुकता था 2-3 दिन के लिए. वापस जब भी वो वुंड खोलते थे तो रीड्रिल, अगेन द ब्लड यूज्ड टू फ्लो आउट. सो we used to do, I went through around 6 to 8 sessions of this root canal where the doctor was putting certain compounds in order to stop the blood from coming out, but it was not helping me a lot. So the doctor suggested, the dentist suggested that आप एक बार आपका एक CBC करा लो. CBC करने के टाइम पे मेरा थोड़ा CBC बहुत haywire आया. So I was detected with lymphocytosis, which is very high amount of lymphocytes. And it's a very strong indicator of AML because your neutrophil count goes down. जो आपके white blood cell, मेरा WBC count normal था, but the neutrophil and lymphocyte count जो है वो haywire गया था. I consulted a doctor of mine. Can I name the doctor here in charge?
So Dr. Puneet Jain is the doctor whom I consulted at Apollo Hospitals, Navi Mumbai, and he being a person who has already treated my father a long time back, he suggested. सॉरी, हम लोग इसको हिंदी में रख सकते हैं क्या? जितना कोशिश करें उतना हो सकता है. नो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो डॉक्टर का कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपका AML इनिशियल स्टेजेस में है. आप पहले ऐसे पेशेंट हो जो मेरे सामने आके बैठा हुआ है. नॉर्मली AML पेशेंट्स जो है, द पेशेंट रिलेटिव्स कम्स एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी बात करने के लिए, क्योंकि अगर पेशेंट इज इन अ वेरी बैड स्टेट. थैंकफुली आई हैड नो सिम्टम्स अदर देन फटीग, सो आई इसलिए मैं डॉक्टर के सामने आके बैठ सकता था. एंड डॉक्टर ने डायग्नोसिस वगैरह वापस हम लोग को ब्लड टेस्ट करने बोला. तो उसके बाद प्रॉपरली फुल ब्लोन AML लेकर मालूम पड़ा ऑलमोस्ट 25 to 30% ब्लास्ट सेल्स थे. ब्लास्ट सेल्स एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड ब्लड सेल्स रहते हैं बॉडी के अंदर, जो वाइट ब्लड सेल्स और आपके रेड ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं. So there were a lot of undifferentiated cells were there, and उसकी वजह से प्रोग्रेस होना, I was actually in stage 3, M3, जो डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएट कीमोथेरेपी में आप आना पड़ेगा. एंड द डॉक्टर gave me just 3 days to wrap up whatever was there. So I had a job with an NGO. I had to tell them that मुझे I have to go in for treatment, otherwise I am a goner. So I had actually 3 days to tell my family because they are from a medical they are from a biochemistry background and all those things. उनको समझने में तकलीफ नहीं हुई. But my wife was a bit taken aback. I had accepted the fact that ये सब चीजें हैं. I'm a microbiologist by my background. So ये सब चीजों में बीवी ने थोड़ा लिया दिल पे. But we were admitted on 11th of August. I was admitted. 13th August 2018 में मेरा पहला बोन मैरो का बायोप्सी हुआ. बोन मैरो बायोप्सी में माय ब्लास्ट सेल्स वर वेरी हाई, 27% बढ़ गया था. डॉक्टर ने बोला कि एक आप फर्स्ट आपका 7+3 इंडक्शन कर लो. तो इंडक्शन करने के बाद मेरा पहला इंडक्शन कीमोथेरेपी हैड फेल्ड, एंड तभी मेरे ब्लास्ट सेल्स कुछ 50% के ऊपर चले गए. सो इट वाज वेरी रिस्की. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप और एक ट्राई करता हूँ आप कीमोथेरेपी, विच इज अ स्ट्रॉन्गर कीमोथेरेपी गिवन इन द केस ऑफ रेमिशन. बट ना जो रीअकरेंस होता है कैंसर का, जो कैंसर का रीअकरेंस मैं कट करने के लिए जो कीमोथेरेपी देता हूँ, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द ओरिजिनल, फ्लैग आईडीए जिसे बोला जाता है, तो वो दिया गया. एंड उसके बाद 28 डेज के बाद जब मेरा बोन मैरो बायोप्सी हुआ, थैंकफुली ऑल द कैंसर हैड गॉन अवे. ये सब भगवान की दुआ बोलूंगा मैं, एंड फॉर पीपल हु प्रेड फॉर मी. बट सिंस आई वाज इंटरमीडिएट रिस्क केस, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है. अपोलो वो टाइम पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इक्विप नहीं था, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ सेपरेट वार्ड फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट. So I was referred by Dr. Puneet Jain to his colleague in Pune, Dr. Sameer Melinkari. तो ये दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट करना पड़ा. This is I think the 6th of December 2018. So 6th of December 2018 को मेरा उधर पहले एक सेंट्रल कैथेटर डाला गया, उसी से मेरा कीमोथेरेपी वगैरह चालू हुआ. So in Apollo I had undergone 3 rounds of chemotherapy, which was the first plus the second plus the third for maintenance. And मेरा ट्रांसप्लांट के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पहले, my bone marrow transplant is actually with the help of an unrelated bone marrow donor. So I took help from a company called as Datri, which is an NGO which helps in procuring bone marrow donors. So उनके तरफ मुझे फुल HLA टाइपिंग करके मैच मिला था. Thanks a lot for the donor who provided the cells in the right amount of time. So otherwise I would not be here talking with you. मेरा कंडीशन उतना बुरा हुआ था. And 13th December 2018 was the date of my transplant.
And it's been a long journey. It's almost 141 days of hospitalization, 4 chemos, 1 complete body irradiation therapy, and yeah, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए. थोड़े CMV भी घुस गया था मेरे बॉडी में, प्लस मुझे साइटोमेगालोवायरस, एंड आई वाज आल्सो डिटेक्टेड विद ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइन. सो अनकंट्रोलेबल डायरिया था मुझे आफ्टर द ट्रांसप्लांट. सो वो स्टेरॉइड्स देके कंट्रोल किया गया. इट वाज अ वेरी हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स व्हिच इज गिवन टू मी टू कंट्रोल द GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज बोलते हैं उसको. तो या दैट्स माय जर्नी एज ऑफ नाउ. Okay, thank you Amit for sharing this. So जब आपका डायग्नोसिस हुआ था, आपने बोला कि ठीक है आपकी फैमिली फिर भी समझ पाई थी, Yes. आपकी वाइफ नहीं समझ पाई थी, तो She actually was joking at me. तू कुछ भी बोलता रहता है, तुझे कुछ नहीं हुआ है, बराबर रिपोर्ट वापस दिखा के सेकंड ओपिनियन लेते हैं चाहिए तो करके. So then I told her that Gopi, this is not the case. ये actually कैंसर ही है. So keep your heart strong is what I told her, and she has been the pillar of strength for me all throughout. Wow, that's really great to know because caregiver सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन कर जाते हैं. 100%. और पेशेंट्स को फिर भी मैंने काफी स्ट्रेंथ और करेज देखा है, बट caregivers are even more. Yeah, even more, right? So good to know about that, you know, family because initially हमेशा शॉक का इनिशियल डायग्नोसिस बहुत ज्यादा होता है. हाँ जी. बट अमित, आप माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी कैंसर डायग्नोसिस इज ऑलवेज शॉकिंग. सो आपने उतना इजीली लिया था जितना इजीली आप अभी बता रहे हैं? Yes, I took it easily because I was also working with an NGO in organ transplant and organ donation. मोहन फाउंडेशन नामक NGO से मैं जुड़ा हुआ था 2017 से लेकर 2018 तक. And making people aware on the process of organ transplant as well as organ donation was my important role in that organization. So हम hospitals में किधर करने के लिए जाते थे. So I was well aware of all the things that happened. Okay. तो अभी जब आपका डॉक्टर ने आपको क्या डायरेक्टली बोल दिया था कि आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है? No, he said that पहले आप इंडक्शन थेरेपी कराओ 7+3. उसके 14 दिनों के बाद बोन मैरो मेरा वापस बायोप्सी हुआ. उसमें मेरा 50% के ऊपर ब्लास्ट सेल्स आए. तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि दिस इज समथिंग गोइंग, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू. वी विल डू अ फ्लैग आईडीए व्हिच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी, स्ट्रॉन्गर देन द इंडक्शन. तो उससे मेरा रेमिशन में आ गया. साइटोजेनेटिक रेमिशन जिसे बोलते हैं, उसमें आ गया मैं, थैंकफुली. ओके, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट करवाने की क्यों जरूरत पड़ी? ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज आई वाज एन इंटरमीडिएट रिस्क केस. तो लो रिस्क में विद कंटिन्यूअल कीमोथेरेपीज आपको ट्रांसप्लांट को जाने की जरूरत नहीं रहती है. बट इंटरमीडिएट और हाई रिस्क के लिए ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. गॉट इट. ओके. एंड आपके केस में जैसे आपने बताया कि डोनर्स अगर दाता से नहीं मिलता, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि अगर आज किसी को डोनर की जरूरत है तो कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको डोनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ओके, वन इज दात्री, अदर इज टाटा मेमोरियल का खुद का बोन मैरो रजिस्ट्री है बॉम्बे में. दीज आर द टू आई नो ऑफ. देयर आर आई थिंक सम अदर बोन मैरो रजिस्ट्रीज आल्सो इन इंडिया. MDRI का भी रजिस्ट्री है. एंड या दैट्स अबाउट ऑल. KMST है जहाँ से या गॉट इट. ओके. एंड इसका ट्रांसप्लांट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है. So how that was quite huge. So it was estimated around 40 lakhs. Okay. The transplant cost. Yeah. So we underwent crowdfunding with Impact Guru. Right. So बहुत सारे डोनर्स आए हैं जिन्हें हम पहचानते भी नहीं थे. इनफैक्ट मेरे वाइफ के जो भी फॉरेन के MNC के जो भी वर्कर्स थे या फिर कोई फोटोग्राफर्स थे जो कॉन्टैक्ट में थे, they have also donated. Wow. So That's it's really been a very thankful journey for the crowdfunding to take place. And I know the importance of crowdfunding. That's why I keep on contributing. Yeah, that's really good to know because once you go through the journey and then we realize the importance of it, that लोगों को कितना ज्यादा जरूरत होता है और उसमें exactly ma'am, ना भी contribution आता है, it matters a lot. So yes, thank you. Thanks to all the donors who supported you, and thanks to you as well who are supporting others now. So wonderful.
एंड ट्रांसप्लांट जैसे कई बार है ना क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर्स कभी कभी चॉइसेस देते हैं कि या तो आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, ये कीमो ले लीजिए, या फिर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, बट एक पेशेंट कैसे डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है? Okay, so I would say for any person who is not that technically qualified, जो lay persons हैं, it is better for them to go in for a second opinion. But I would say trust the doctor who's treating you first, because he knows your condition better. आप second opinion के लिए जाओ तो भी, but it all depends on how your case is. It depends on case to case basis. अगर low risk है तो उसमें transplant के लिए जाना is not a good thing to do. इंटरमीडिएट टू हाई रिस्क अगर कंडीशन है आपका तो इसलिए ही ट्रांसप्लांट के लिए जाना बेहतर रहता है. अच्छा, ओके, ठीक है. और ट्रांसप्लांट ऐसा है कि आप किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल से वहीं से करवा सकते हैं? See, any organization or any hospital that has expertise in bone marrow transplant, those are preferable. अपोलो है, फिर दीनानाथ मंगेशकर पुणे है. There is, I think Hinduja is also there, and global hospitals Mumbai is also there. गवर्नमेंट भी टाटा, CRI सब लोग they are there. Actrec and TMH is also there. Right. Yeah. Got it. But TMH का एक problem है कि if you are having some kind of influence, your treatment happens fast. आप अगर जाओगे टाटा में ट्रीटमेंट लेने के लिए लाइन बहुत है उधर, so it becomes difficult. Right. ओके, आपने एक बॉडी सम थेरेपी के बारे में बताया था, वो क्या था, आप उसके बारे में बताएंगे? Pardon? You said some therapy, some body something therapy you mentioned that you went through after your bone marrow transplant. हाँ, after my bone transplant, I underwent therapy, क्या natural healing therapy बोलते हैं उसको. नहीं, कुछ मेडिकल आपने बताया था अभी. Anyway, ठीक है, शायद वो there was one word that you mentioned that you went through this treatment, this therapy after your transplant. आपको कुछ इन्फेक्शन भी हो गया था ना? हाँ. तो it is called as graft versus host disease, GVHD. Okay. तो GVHD एक्चुअली क्या है मालूम है? आपके खुद के सेल्स और डोनर के सेल्स अगर कोरिलेशन और मैच में नहीं आते हैं तो योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट. बहुत बार इसकी वजह से आपके डोनर के सेल्स रिजेक्ट हो सकते हैं. So in order to have that particular balance, you need to have some therapy like a steroid that is injected into the body in order to lower your immunity so that the graft or the donor cells get a chance to grow in your body. Got it. Okay. Right. And कई लोगों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में इन्फेक्शन भी हो जाता है, irreversible infection. And people say it's risky. क्या ये इतना ज्यादा रिस्की है जितना हम सोचते हैं? It is risky, but with proper medication in nowadays. अभी CMV का साइटोमेगलोवायरस का मैं जो बात किया था, जो मुझे हुआ भी था, तो I was put on valganoclovir, ganicyclovir, ऐसे सब बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है एंटीवायरल. तो उससे टेक केयर हो जाता है. ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि it is life threatening. हाँ, अगर if you are left without any diagnosis, then it is life threatening. Right. Okay. And for this treatment, people also go to Vellore, right? VIT. So CMC Vellore. Christian Medical College. Right. So CMC Vellore, how is the treatment different over there? Because मैंने इंडिया में काफी लोगों को देखा है वहाँ पे जाते हुए CMC Vellore. So to tell you one thing very frankly, both of my treating doctors are alumni of CMC Vellore. Okay. So Dr. Puneet Jain and Dr. Samir Melinkari from Pune, they are both alumni of CMC Vellore. So CMC Vellore is the key institute in India which trains people. Right. Yeah. Okay. Got It's a very good institute. किसी को अगर Vellore में भी करना है तो, especially for South Indian crowd, right, people from South India, they can try CMC Vellore. Right. And आपने अपनी ट्रीटमेंट के दौरान, during the treatment, after the treatment, what are the natural healing or other integrative therapies that you tried? So natural integrative therapy मैंने ऐसे कुछ एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा ट्राई नहीं किया था. I had not tried. रेकी ट्राई किया था मेरी बीवी ने via some distant remote healer. तो वो रेकी होता था and it was very beneficial. It used to calm my head. Wow, wonderful. Okay. And आपने ट्रीटमेंट के आपको साइड इफेक्ट्स हुए थे? Side effects, thankfully I did not have nausea or vomiting.
उल्टी या फिर उल्टी का फीलिंग आया नहीं था मुझे। हाँ, बट अगर आप ट्रांसप्लांट के पहले का कीमोथेरेपी बात करो, जहाँ पे एक ड्रग है कॉल्ड एज मेल्फलान, वो मेल्फलान के वजह से पूरा मेरे मुंह में छाले आ गए थे। दैट वाज द ओनली टाइम आई हैड अ साइड इफेक्ट। पूरे मेरे 3 कीमोथेरेपी के टाइम पे आई हैड नो साइड इफेक्ट्स। सो मुंह में छाले आए थे एंड आई आल्सो वॉमिटेड ब्लड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अल्सर ब्रेकिंग इन माय माउथ। तो ये थोड़े, these are the side effects that one might have to undergo. It depends on case to case basis. Right. हर एक को होगा नहीं होगा ऐसा कुछ विधि लिखित नहीं है, होना है तो होता है। Okay. And आपने कुछ भी lifestyle changes like walking, exercise or physical हाँ, activity, eating? 100%. I have given up most of the sugar that I was taking earlier. Therapy के time पे I was not taking any kind of sugar even in tea or coffee. Walks मतलब walks के लिए जाता था मेरी वाइफ के साथ। प्लस हाँ, इतना कुछ नहीं था, बट देयर वाज अ टाइम वेयर मुझे खाना भी नहीं जाता था पेट। तो हॉस्पिटल में बीवी के साथ झगड़े भी होते थे, तू खा नहीं रहे बराबर से, कैसे जिएगा करके। तो देन आई वाज स्टार्टेड ऑन अ लिक्विड कॉल्ड एज टीपीएन, तो उसकी वजह से चल गया। राइट। हाँ, मतलब पेशेंट और केयरगिवर के बीच में काफी झगड़े होते हैं। हाय, my patient and caregivers is to not any kind of raw food when the treatment is going on. तो ठंडा चीज, तेल चीज पेशेंट केयरगिवर पेशेंट को ना दे, और पेशेंट भी खुद की मन मर्जी से कुछ करने ना जाए। And don't try and go in for Ayurvedic therapies when the chemotherapy is going on, because that can affect your therapy. Yeah, also depends what Ayurvedic therapy or what are the heavy metals or ingredients in that. Yes. Usually, if they're heavy metals, you shouldn't be taking it with chemotherapy. But if it's not, it depends what are the ingredients of it. Yeah. Great. Okay. So, how the life has changed before the diagnosis and after the diagnosis? After the diagnosis, thanks to the donor, I am alive. My complete mindset has changed. पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचा करता था, but अभी मेरा mindset पूरा changed है. I'm more towards positive. I have actually counseled 6 or 8 patients on their AML journey, and people have taken inputs from me to go on the right path. Thankfully, they are there. What are the top 3 biggest challenges that people face when they are diagnosed with cancer? Okay, the biggest one being fear. आप उससे हारोगे या जीतोगे, ये पहला सबसे बड़ा डेंजरस थिंग। लोगों को डरना नहीं है, जो भी डॉक्टर की दी हुई सलाह है वो प्रॉपरली फॉलो करें। तीसरा, कीप अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि ये जंग है, आपको लड़नी है, इससे हार नहीं माननी है। whoever be it, any age of the patient, हार नहीं माननी है। That's really good. सही बोल रहे हैं आप। Positive attitude, strong willpower, Yes. it takes care of half of your problems. And उस वक्त जब हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ और हमें क्या करना है, आगे किस डायरेक्शन में जाना है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं कर लूंगी। काफी पेशेंट्स साथ मैंने देखा है, बहुत सारे जो भी सर्वाइवर्स हैं, कॉन्करर्स हैं, द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ऑफ देम वर दैट दे हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर कि आई विल डू इट। एंड स्टेज 4 से भी लोग सर्वाइव किए हैं। सो राइट माइंड, मिरेकलस एग्जैक्टली। सो वेरी वेरी राइट थिंग दैट यू सेड। सो अमित, अभी जैसे आप पेशेंट से बात करते हैं, यू आर गाइडिंग देम, काउंसलिंग देम, आपको क्या लगता है कि what are the things that any organization needs and उनको Alavis Cancer, any other organization can do to solve their problem, to make it easy for them? I would suggest a peer platform where people can actually discuss their problems, keeping aside their egos. डरना नहीं चाहिए लोगों को डिस्कस करने के लिए their problems. और I would suggest that ये जो मन में स्टिग्मा है कि कैंसर थेरेपी में मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैंसर के लिए थेरेपी करूं या नहीं, वो दिल से निकाल देना चाहिए। देयर आर मेनी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स दैट आर करेंटली अवेलेबल राइट नाउ वेयर पीपल कम फोर्थ एंड डोनेट। तो आपके पास अगर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका थोड़ा भी लो भी है,
And being middle class also, many people cannot afford cancer therapy. So No. crowdfunding platforms is the way forward. Right. Got it. Okay. And in your journey, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो what are the things that helped you in coming out of it and recovery process में? हाँ, तो I used to hear to many audiobooks which are self-healing audiobooks. तो लुइसा हे का एक ऑडियो बुक है, You Can Heal Yourself. Yeah. Yeah. तो I used to listen to it almost every alternate day with my wife on speaker, and it really helps you. Those self affirmations, if you keep on reminding yourself that you can win through this, you can do whatever you want to. There are many self affirmations everywhere, so Yeah. you need to, they build up your inner strength, you know. Very true. Very true. Louise Hay ka very popular. She has healed herself, and Yeah. many other people who could come out of it have said Yes, this, ma'am. that Yes, ma'am. inspiration and way forward की how can your body, because body में immense self healing capacity होती है, and Exactly. I think survivors, there is somebody called Diana. She has been the speaker on this platform. हाँ. And Diana ko 14 years back she had I mean when she was 34, that time she had colon cancer. She could recover from it, and when she was 60-year-old, 50-year-old, she was diagnosed with lung cancer, new cancer altogether. और वो जब हुआ तो वो ब्रेन मेटास्टेटिस हो गया, और उसी वक्त उनके हस्बैंड को किडनी कैंसर भी हुआ था. Oh my God. Both came out of it, and डायना के पास तो anyway it was stage 4 lung cancer, and डॉक्टर्स ने बोल दिया था hardly 2-3 months to live, and she is my good friend now, and it's been 12 years, touch wood, she's here with us. Touch wood, touch wood, touch wood. I used to do my own self healing. She was trying all the integrative methods and everything, and plus she was a dancer. तो वो डांस के फॉर्म में अपने कैंसर से बात करती थी, बॉडी के हर एक ऑर्गन से बात करती थी, अपनी सेल से बात करती थी. She says कि I used to have dream of all these cancer, and I am talking to cancer, having a conversation. Yeah. And many other things. The love of her grandkids and her husband could bring her back from this cancer diagnosis. So I think it's when you realize the potential of your own body self healing capacity is what So हम जब try करते हैं, but कभी-कभी पता नहीं होता है कि कैसे करना है. So if after this session, if you can also share some of the affirmations on the group में. I'll do that, ma'am. Yeah, I'll do that. I'm more than happy to do it. Yeah, thank you. So very helpful for others who are, because many times people come and say कि Dimple ये सब पता है, but क्या करना है वो नहीं पता है. So exactly. Meditation, yoga, self healing सब बहुत बोलते हैं, strong will power, but क्या करें कि हम वो रख पाएं. So I think वो tips काफी helpful रहेंगे अगर आप share कर देंगे तो. 100%, man. It will be a pleasure to share it. Yeah, thank you. Thanks, Amit. So, Amit, anything that you would want to share with people who are currently going through the decision of going through the transplant, or yeah? I would say listen to your doctor. Listen to your body, listen to your doctor. That's the only one thing I will want to tell every patient. Doctor ki suno. And take a second opinion if you really want to reconfirm what your earlier doctor is saying. Right. Okay. ऐसा नहीं होगा कि एक डॉक्टर एक बोल रहा है, दूसरा डॉक्टर नहीं बोल रहा है. आपके रिपोर्ट्स के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है, trust your doctor on it. Right. Don't question him. Right. And thankfully, I had a good team of doctors taking care of me. भगवान करे ऐसे डॉक्टर सबको मिले. Yeah. Wonderful. So happy to know. आपका ट्रीटमेंट कहाँ से हुआ था? It happened in 2 hospitals actually. One was Apollo Navi Mumbai, and other was Deenanath Mangeshkar Hospital, Pune. Okay, got it. Right. And अमित, हम लोग जैसे आपने बताया कि आप 140 days तक हॉस्पिटल में थे. हाँ जी. और उसके बाद that is a cumulative right. 3 hospitalization. Yeah, and I'm sure कि you have great caregivers who are taking care of you. So, absolutely, ma'am. Absolutely. Yeah. Would you like to share anything for your caregivers? So my biggest strength was my wife, who was next to me in this entire journey. And all thanks to her that I am on my feet right now. Of course, my father, my uncle, my mother-in-law as well. इनका सबका moral support मुझे रहा है. Unfortunately, my father is not there any longer.
he succumbed to pancreatic cancer in 2021 January. I was also a caregiver to him, so the cancer ka journey, the caregiver ka journey, I have been on the both sides, as receiving as well as the giving side. So I know the meaning of a person going through it. It's been moral support is most important, always. Yeah, very true. Sorry to hear about your father. It's it's really coming to me as a shock कि एक ही फैमिली में दो कैंसर के केसेस. या कभी हुआ था आपके फादर को? उनको डिटेक्ट हुआ था अगस्त 2020 में. अच्छा. It started with a back pain and then it progressed very fast. It was a very aggressive pancreatic cancer which metastasized to the liver and the other parts of the body as well. So yeah, right. आपको लगता है कि उनका डायग्नोसिस जल्दी हो सकता था किसी भी तरीके से? जल्दी हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ द करंट कंडीशन ऑफ कोविड हम लोग किधर बाहर हॉस्पिटल में लेके जाने को डरते थे. He was also a liver transplant recipient. In 2016 उनका liver transplant हुआ था. So वो सब कोविड के डर में ही मेन हॉस्पिटल में लेके जाने का ये सब प्रॉब्लम में प्रोग्रेस टू अनदर एक्सटेंट. अच्छा, उनको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद में उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ? हाँ जी 4 साल बाद. ओके, गॉट इट. हाउस योर फैमिली डूइंग नाउ? दे आर फाइन मैम, विद गॉड्स ग्रेस. या, गॉट इट. And every crisis in our life teaches us certain lessons. So what was the biggest lesson for you? Biggest lesson to me is that keep a positive mindset. किसी का बुरा भला बोले उस पे ध्यान मत दो, and keep on going. Live life as the day comes. Right. कल का किसी को पता नहीं है. जो जीते हो पूरा जियो. But अमित, at the same time जब हम बार बार पेशेंट्स को और केयरगिवर्स को बोलते हैं कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और वो खुद उनके लिए काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि मेरे को आ रहे हैं नेगेटिव इमोशंस और फियर, बट देन सबने बोला है कि पॉजिटिव ही रहना है और मैं नहीं रह पा रही हूँ, विच इज रॉन्ग. ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत ही वर्चुअल प्रेशर क्रिएट हो गया है पॉजिटिव रहने का. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दिस? आई वुड से स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो जाओ विद एनी फेथ, योर respective faiths, leave सब भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, जो भी, he is the only person who can pull you through this. Right. Yeah, in fact I give this answer to everybody who says कि मैम पॉजिटिव कैसे रहें, कि थॉट्स आएगी, नेगेटिव थॉट्स भी आएगी, डर भी लगेगा, बट देन एक्सेप्ट करो उसे कि हाँ कैंसर हुआ है और इसी के लिए ऐसी थॉट्स आ भी रही हैं, बट देन मुझे उसका करना क्या है, मुझे अभी आगे कैसे रहना है, क्या क्या चीजें करनी है उससे रिकवर होने के लिए. सो हैविंग दैट प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म इज इक्वली इम्पोर्टेंट. होप इज इक्वली इम्पोर्टेंट. सो लेट द थॉट्स कम, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, डोंट हाइड देम, डोंट अवॉइड इट, क्योंकि आज अवॉइड करोगे तो कल फिर से आएगी वो थॉट्स. उसको एक्सेप्ट करके देन फाइंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की व्हाट आर द वेज, चॉइसेस ऑफ हीलिंग फॉर मी, जिससे कि मुझे आई विल देन विद लेजर शार्प अप्रोच डू दिस. So following it religiously, following it very consistently, और वो तभी होगा जब आपकी विल पावर स्ट्रांग है, जब आप courageously उन चीजों को करो कि नहीं, I will do it. 100%. Amit has gone through it, he has come out of it, many others have come out of it. तो अगर वो लोग कैंसर से ठीक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ. 100%. So, yeah, it's very very important. So, Amit, what are the things that you are very very grateful of? Grateful of having a great family. That's point number one. Grateful to having a donor without which I won't be alive, and the doctors who came along and treated me all the way. ये 3 चीजों के लिए. Okay, that's really great. Yeah. So if you have to summarize your entire journey into one sentence, तो आपके लिए वो क्या होगा? One sentence. One sentence. Give away all your fears. Have faith in the Almighty, and you will pull through. Wow, that's amazing, because I think after just talking to you for last 30 minutes, I think the one message that I'm taking is your conviction, your faith in the Almighty, faith in that I will get through it,
and your conviction was so strong, इतना strong conviction आपका कि आपने वो कर दिखाया. So I think it's a message to everybody कि हो गया है cancer and we will come out of it. डरने की जरूरत नहीं है उससे रोज. Correct, man. Yeah, and we hope that and pray that our Divya also comes out of it. 100%, man. I pray for her. No problem. Yeah, right. So we'd love to hear from others about their experience, and we'll begin with Dilip Kumar ji. Yes, sir. Yeah. Hi, Dilip. Thank you. In fact, I was when Amit narrated his story, I could see a mirror. I could see myself in that. Every sentence he spoke, I always speak. I've been speaking since last 12 years. I am a multiple myeloma survivor, presently undergoing a treatment for third relapse. Oh God. After 2 transplants, one in 2011 and second is in 2019, and a spine surgery in 2010 because of cord compression. It took me 28 months to walk normally. But whatever he said, whether it was about Louis Hay, sorry, आपका म्यूट हो गया था. Yes. Also a Bhagavad Gita for me, that particular book, I still remember each and every year, what is written on कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो मुझे मालूम है. दूसरी एक बात यह है कि लाइफ जैसे चेंज होती है कि what I was before earlier and what I am today after diagnosed with multiple myeloma. AML and multiple myeloma is very, 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 they are like, siblings. The multiple myeloma is a plasma cell cancer in the bone marrow. Whereas AML, when the myeloma travels into the blood, the plasma cells, when they remain in the bone marrow. But when they travel into the bloodstream, the peripheral blood, it becomes acute myeloid leukemia. So the majority of the treatment is also very, very similar, the treatment and all these things. And many of our myeloma patients, they actually progress to AML at a later, when they keep on, because still it remains incurable. And just to know our, friends, in 2011, when I was undergoing my first bone marrow transplant, my doctor suggested that, Dilip, lot many things about multiple myeloma, and you are very courageous, and you are unlike a different. You're not a patient itself. So why don't you spread awareness about multiple myeloma? So after that, we started a NGO called Myeloma Friends Charitable Trust. Dimple, you must have heard about it. The Myeloma Friends Charitable Trust. So here, since last this year, we are completing 10 years in this March. Since last 11 years, I've been counseling myeloma patients. I must have counseled thousands of myeloma patients. Wonderful. And today, I can proudly say that Myeloma Friends has it is spread not only all pan India, but it has become famous internationally also. Wow. And we have been taking many AML, acute myeloid leukemia, then amyloidosis, and myeloma, and the CML, lymphoma. So all blood-related blood cancers, we do take care of that. And fortunately for me, it is a blessing actually. I always say that it is myeloma came to me as a blessing, and because of that, my life has completely changed. By profession, I am an architect, and it is my I am 61. So 40 years of my architecture practice.
पूरा कंटेंटेड हूँ, मतलब नाम, शौहरत, इज्जत, रुपया, पैसा, माल, मिलकत, सब कुछ बहुत मिला। बट जो माइलोमा का काम करना शुरू किया ना, तो पिछले 5 साल में उसने माइलोमा फ्रेंड्स और दिलीप मेवाड़ा को इंटरनेशनली फेमस कर दिया, यू नो। एंड मजे की बात बताता हूँ, अमित, यू मस्ट बी नोइंग दीज नेम्स, डॉक्टर साजी कुमार, विंसेंट राजकुमार, निखिल मुंशी, नुपुर राजे, these are all Indian origin US doctors from Mayo Clinic to Sloan Kettering to Dana Farber and Harvard universities. All of they know me personally. This is the blessings. This is the blessings I am telling you. And how many people I am serving in myeloma. I mean, I am surviving because of their well wishes, prayers, and name it, you name it, and everything is there. Every day I'm spending 3 to 4 hours in counseling every day. Every day. It's really great, Dilip ji, to know about your wonderful journey, and also अभी आप किस तरीके से पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हो, and definitely we would also know जो पेशेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, we would love to have you also on the group, ताकि for the same cancer type we can have similar kind of conversations, क्योंकि जैसा कि अमित ने बताया कि peer platform जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं गाइडेंस में और डायरेक्शन में. So great to have, so good to hear from you. Would like to hear from Anuradha ji. Thank you, Dilip ji. Yeah, thank you. Thank you. Hello everyone. Hi. Hey, Amit, आपकी स्टोरी भी अमेजिंग थी. सॉरी आई जॉइंड अ बिट लेट, बट मेरे को लगता है डिम्पल, हम इस प्लेटफॉर्म पे सो मैनी लाइक माइंडेड पीपल को मिलाने के लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए. जैसे अमित ने कहा कि एग्जैक्टली भगवान पे विश्वास रखना, मतलब मैं भी उसी में क्यों कि जैसे उतना ही अंधा विश्वास रखती हूँ भगवान पे कि जो वो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है. तो जैसे अमित ने कहा कि उस पर विश्वास रख के पूरी जंग जीत ली और आगे भी अच्छे ही रहेंगे. और दूसरा अभी जैसे मेवाड़ा जी ने भी कहा, तो सेम मेरे को ऐसा लग रहा था कि यही चीजें शायद रिपीट होती है कि जैसे ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सेम जैसे मेवाड़ा जी ने कहा वैसे मुझे भी लगता है अपनी जिंदगी में कि मेरे को भी जब रीअकरेंस आया तो दूसरों की ब्लेसिंग्स से ही खड़ी हूँ. तो मेवाड़ा जी, मैं इस थॉट में भी बिल्कुल आपके साथ हूँ और किसी दिन आपकी जर्नी भी हम लोग सुनना चाहेंगे. तो आप दोनों के लिए, अमित और मेवाड़ा जी, आपके लिए भी हेड्स ऑफ टू योर जर्नी, और हम लोग इसी तरह कनेक्टेड रहें. बहुत अच्छा लगता है सबसे इस प्लेटफॉर्म पे मिलके. बहुत सारा मतलब जिसको कहते हैं एनर्जी बूस्टर हो जाता है एक वीक के लिए. अरे वाह, इतनी एनर्जी मिलती है कुछ कहने नहीं. थैंक्स डिम्पल. थैंक यू सो मच अनुराधा जी. एंड अनुराधा जी आल्सो, शी इज अ ब्रेस्ट कैंसर विजेता, और वो इंदौर में संगिनी करके सपोर्ट ग्रुप चला रहे हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को उन्होंने काउंसल किया है और गाइडेंस किया है. तो वेरी वेरी आई एम प्राउड टू हैट्स ऑफ टू यू मैम. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. राइडिंग इन द सेम बोट मिस्टर मेवाड़ा. वी आर राइडिंग इन द सेम बोट लाइक. थैंक यू. हाय राजेंद्र जी. Hi, how are you? Good. How are you? That's fine. Okay, great. Let me give some slightly different opinion. It's a bit controversial. See, many of the cancer patients, when they survive, they say because of the belief or faith in God, we are survived. I have seen many people who died also. They had great faith in God, and everything was there. They were praying every day and everything, but they could not survive. So credit और डेबिट both are given to God. जो बच जाते हैं वो भी भगवान के लिए कहते हैं, वो चल जाते तो बोल जाते हैं कि इसका कर्म ऐसा होगा, उसका आयुष्य पूरा हो गया होगा, तो भगवान की इच्छा होगी तो चले गए. So it's a bit always a conflicting things for me. I'm not able to justify what is the role behind person survival or person revival. My only point is, okay, to have a faith is one thing, that is good. But my point is that you need to be proactive. आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? तो psychologically, scientifically जो मैं बता रहा हूँ ना, कि everyone has to be proactive. अभी आप जो बता रहे हैं कि किसी को जाकर बता दो कि आप पॉजिटिव रहो, ये बोलना तो बहुत इजी हो जाता है. मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि आप पॉजिटिव हो जाओ, लेकिन वो बोलते कैसे पॉजिटिव हो जाओ, तो मेरे सारे बॉडी में पेन है, आप बोलते पॉजिटिव हो जाओ, कैसे पॉजिटिव हो जाओ. तो अगर मैं जाता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा बैठता हूँ, तो थोड़ा उसके माइंड में ठीक होता है.
मेरा पॉइंट एक ही है कि अगर आपको बचना है, आपको जाना है और आपको यहाँ रहना है, इट इज नॉट ऑफ योर चॉइस. मैंने बताया कि बर्थ एंड डेथ पहले भी बताया था, बर्थ इज नॉट चॉइस योर, डेथ इज ऑल्सो योर नॉट चॉइस. उसके बीच में जो सी है कि कैसे जीना है वो आपकी चॉइस है. तो एक पॉइंट जरूरी क्या है कि कोई भी कैंसर पेशेंट होता है ना, तो उसको रेगुलरली मिलना और मोटिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. नहीं तो आप 1 वीक बाद जाओ तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है. मेरे कई लोगों को मिलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव हम जाते तब बहुत पॉजिटिव हो जाते, और 5 दिन के बाद उनकी वाइफ को पूछेंगे तो कि नहीं फिर से ही वैसे हो गए. क्योंकि इट इज ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट इट इज नॉट वेरी इजी. कैंसर का जो पेन है, सबको ज्यादा पेन है वो है. दूसरा जो बताया ना डॉक्टर, कि अभी मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए. नीड हो तो नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट जानने के लिए कि कितना खर्च. अभी मैं बताऊं कि एक कैंसर को यहाँ एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में पूछा डॉक्टर को, जो ऑपरेशन 4 लाख तो दूसरी हॉस्पिटल में 2.5 लाख. तो आप क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा पैसा ही बोल देते हैं आपको दे देने का. तो आप क्या करेंगे, आप ऑलवेज नेगोशिएटिंग अदर, फाइंड आउट अनदर गुड डॉक्टर, टेक सेकंड और थर्ड ओपिनियन, और जो पैसा बचे वो बचे हुए पैसे से किसी कैंसर पेशेंट को ही मदद करता. आपके पास है पैसा, उसका मतलब ये नहीं है कि जो डॉक्टर ने बोला वो दे दो. माय पॉइंट इज दिस. और अभी तो सबको पता है कि मेडिकल प्रोफेशन इतना थोड़ा गंदा हो गया है. आप मानो कि नहीं मानो, सभी जगह पैसे की ही बात करते हैं. डॉक्टर बहुत थोड़े डॉक्टर हैं जो रियली में अच्छे होते, बाकी मेनी ऑफ द डॉक्टर्स आर ऑलवेज आफ्टर मनी. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर को भी मिला हूँ और मिलता रहता हूँ. कई डॉक्टर मेरे फ्रेंड हैं. तो सभी कैंसर पेशेंट को मैं एक ही सलाह जरूर देता हूँ कि आप दूसरे डॉक्टर को बताओ, जरूर बताओ, और उसको पूछो क्या होता है, क्योंकि पेशेंट को बाय एंड लार्ज कुछ पता ही नहीं होता है. मैं अभी एक पेशेंट को मिला था, कैंसर पेशेंट को कुछ पता नहीं है. वो उसका डॉक्टर ने उसे ऐसे वहां लगा दिया कि बेचारा पता ही नहीं कि उसको क्या हुआ. तो फिर मैंने बोला कि आप दूसरे डॉक्टर, मैंने नाम दिया जो मेरा डॉक्टर था उसके पास गए. तो हाफ एन आवर, क्योंकि कोई डॉक्टर ना अभी ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा देता ही नहीं कैंसर पेशेंट को, क्योंकि वो इतना भरा हुआ होता है हॉस्पिटल में. तो कोई डॉक्टर आपको मिनिमम 15 मिनट 20 मिनट न दे, वो डॉक्टर के पास जाने का ही नहीं. मिनिमम 15-20 मिनट नहीं, हाफ एन आवर भी चाहिए, क्योंकि आपका कितना सारा क्वेश्चन होता है जो डॉक्टर ही सोल्व कर सकता है. हम जाते हैं तो क्या करते हैं कि मोटिवेट करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कहते हैं. लेकिन जो पर्टिकुलरली आदमी जो सफर कर रहा है, उसकी फैमिली जो सफर कर रही है, उसके लिए डॉक्टर का ओपिनियन बहुत जरूरी है. हम तो देखो ऐसे भी थोड़े इंटेलेक्चुअल है, सब जानते हैं, चीजें जानते हैं, कई चीजें जानते हैं, कई चीजें स्टडी करते हैं, लेकिन वो लोगों को कोई कुछ पता नहीं होता है कि क्या होता है. डॉक्टर जो फीस मांगता है दे देता है, डॉक्टर जो बोलता है वो टेस्ट करवा देता है, और फिर भी वो स्टडी करके उसके तो कुछ समझता नहीं है, तो उसको डॉक्टर के पास ही जाना है. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर माइंड कंडीशनिंग के लिए, पॉजिटिव माइंड कंडीशनिंग के लिए, वी हैव टू रिपीटेडली मीट देम, टॉक टू देम. So that is what I'm doing, and this is the circle. What you have done is excellent, good circle, and we need to interact. And after interacting, we also get educated, and we should meet frequently all cancer patients. And अगर हम बच गए हैं तो हमारी एक नैतिक फर्ज है कि जो हमारे फ्रेंड है उसको डेफिनेटली फाइनेंशियली सपोर्ट करे, क्योंकि वो भी जरूरी है. और इसके लिए मैंने बताया ना कि अभी तो मैंने खाली दिव्या का नाम सुना था, मुझे लगा कि नहीं दिव्या को तो अभी भी और भी ये कराऊंगा. कि इतनी अच्छी लड़की, अभी उसको मॉन्टेरो कराने 30 लाख का एक्सपेंडिचर है. वी फील सो बैड अबाउट. तो एक आपके फोरम से भी ऐसे हमारे भी ग्रुप में जो है और कोई ग्रुप में, तो उसको फंड्स के लिए भी हम सबको मदद करना चाहिए. ग्रुप में एक आध ग्रुप में भी रिक्वेस्ट हो, तुमने डाला है, लेकिन सी सच अ लवली लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है, मुझे पता नहीं है. इतनी फीलिंग्स आती है कि ऐसे अभी क्यों हो गया. अभी कि मैंने तो मैसेज दोपहर को देखा, लेकिन ये सब कुछ जरूरी क्या है कि सपोर्ट की, फिजिकल, मेंटल एंड इवन फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है. तो और हम सबको ये सब करना चाहिए. तो ओपिनियन है. भगवान की बात ठीक है, लेकिन सभी भगवान पे मत छोड़ो. भगवान बोले कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध में मत रहो, पुरुषार्थ में काम करो. तो मेरे महाराज साहब को क्वेश्चन पूछा था, पुरुषार्थ और प्रारब्ध में कितना परसेंटेज होता है. पुरुषार्थ करना चाहिए कि प्रारब्ध में बैठे रहना चाहिए, कि भगवान अच्छा कर देंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं. ये पुरुषार्थ को प्रायोरिटी देता हूँ. 60% पुरुषार्थ है, 40% प्रारब्ध है, ऐसा सोचो. अगर पुरुषार्थ तो प्रारब्ध ठीक से हो जाएगा. फिर भगवान को क्रेडिट दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट क्रेडिट अपने आप को दो, आपकी फैमिली को दो, आपके फ्रेंड्स को दो, और बाद में भगवान को क्रेडिट दो. भगवान इज अ लास्ट. दैट इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन. सॉरी फॉर लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बाय स्ट्रांग ओपिनियन.
Thank you. Rajendra ji. Thank you so much. I think having faith is what एक होता है ना कि वो faith चाहे वो किसी के लिए हो कि हाँ ये मेरे साथ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो कोई भी है, वो faith ही आपको वो नैया पार लगवाता है is what. तो आई थिंक वही faith की शायद हम सब यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके लिए कि हाँ ये मेरे साथ है और सब कुछ ठीक होगा, बस वो सोच के ही सब कुछ ठीक हो जाता है. एंड बाकी तो चीजें एक बार पॉजिटिविटी आ गई तो फिर तो सारी चीजें इट फॉल्स इन प्लेस. तो यू हैव ऑब्वियसली 3 बार कैंसर को कॉन्करर किया है, आप भी कैंसर विजेता हैं. सो रियली गुड टू हियर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड थैंक यू सो मच. वी हियर फ्रॉम डॉक्टर गायत्री. हाय डॉक्टर गायत्री. Hi Dimple, how are you? Good. And it was wonderful to listen to Amit's story. Dilip Bhai, I have heard before also, and he's doing a great job with myeloma patients. And I would just like to highlight a few things here that there is no harm in taking a second opinion, because many patients I have myself seen, having a lot of diagnostic dilemma in the process of their diagnosis. So it is no harm in taking a second opinion for when you are in doubt, especially as Rajendra ji said that so many of the doctors, I'm not saying everyone is like that, but many of us do come across people who are so commercial minded that you do need a second opinion just to read. Because there was a patient in Pune itself who had contacted me and said that, ma'am, my father has been diagnosed with so and so cancer, and the starting treatment doctor has told me it is going to be 6 lakhs a month. I said, look, I don't know what kind of treatment you're getting that is going to cost 6 lakhs a month. And then I sent that patient to Dr. Sameer Malankari. I said, please go and meet Dr. Sameer and then let's see what he says. And it turned out that, what he was told was totally different. So that chap was so grateful. So there is no harm in taking a second opinion. Secondly, as Rajendra ji was saying that, what kind of, we keep telling everybody have a positive attitude. It doesn't work like that. But yes, what we can remind each person is that, because everyone right up to the end stage of life, तुम 80 साल के होगे तो भी तुम्हारे अंदर कोई तो इच्छा है जिसके लिए तुम जीना चाहते हो. उस इच्छा को जगा के रखना बहुत ही So I was just saying, Dimple, कि second opinion लेना बहुत ज़रूरी है कुछ cases में, और हमें इसमें we should not hesitate to do that. Secondly, every one of us should have some goal, and some aim in life, means something to live for. अगर हम उसको, जैसे हम किसी patient को counsel भी करते हैं, तो obviously people are depressed when they hear that they have cancer, and everybody associates cancer कि भाई अभी हम मरने वाले हैं ऐसे. तो ऐसे टाइम पे उनको remind करना बहुत जरूरी है कि नहीं, तुम किस चीज के लिए जीना चाहते हो. रिमाइंड करो उसको कि तुम्हारे ड्रीम्स पहले क्या थे, तुम्हारे गोल्स क्या थे, तुम जब ठीक थे तुम क्या क्या करना चाहते थे, तो अभी भी तुम ये कर सकते. ये उसको रिमाइंड करना है. तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, और तुम हर चीज को maybe in a different way, it might not be the way you planned, but maybe a little bit different, but you can still achieve those goals. It's nice to remind everybody about that. And I'm absolutely with Dilip Bhai and Amit on the fact that yes, there is a superpower above us all, and he's we all can get the strength from him if we are looking for it from him. अगर हम भगवान की आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है. डॉक्टर्स तो बिल्कुल, हमें डॉक्टर्स के पास भी जाने की, all these things, the way it all works out is because of some divine intervention. Yeah. So you reach the right place, you reach the right doctor, you get the right treatment. That's all divine intervention. Look at Amit's case, a case of unmatched transplant, and that too through Dhatri he got a good match. I mean, what is this? It's all divine intervention. It's not easy otherwise to get a match, when you don't have. So I do believe in this. Thank you. Thank you so much, Dr. Gayatri. Really appreciate it. Thank you. Hi, Mehul. Hey, hi, Dimple. Can you hear me? Am Yes, I audible, yes. visible? Yeah. Okay. Hi, Amit. It was very nice to hear your story and seeing you smile all the time. Thank you, बड़ा sir. अच्छा लगा. अरे सर मत बोलो यार, मतलब बाल अभी तक काले. So I'm also from Pune. Basically, Oh. so yeah, अपना और भी connection है. And
Everything that Rajendra Bhai and Dr. Gayatri all said, yeah, I agree, everything is fine. But let me come back to you. I like the way you kind of approached your cancer. I'm also a stage 4 throat cancer survivor, so I know what you've been through. And the one part I like is, just being very honest about what happened. Like, and not giving up. I like your attitude of not giving up, and जो है वो है, लड़ लेंगे. So nice to hear your story and seeing you. And I definitely would like to stay in touch with people like you. And even I would also like to appreciate Dr. Mr. Dilip Kumar Saab for what he's doing about. I heard him talk about his work he does about in and around cancer. So thank you so much for what all you do, and really appreciate. And we need more people like you to spread the awareness. And it's still considered as a taboo, and I feel very bad for it. And about Divya, again, let me talk about Divya. I just had a word with some of my group people, and we are arranging funds for her. And me and Anuradha ji had a word in the morning. So definitely, we all are praying for her. There are so many people praying for that beautiful soul. So definitely, things will work out, and fingers crossed. We all together can definitely make a difference. Thank you again, Dimple and Amit and everybody for such a wonderful morning for me. Thank you. Thank you so much, Mehul, for sharing your thoughts. And yeah, we all pray for Divya, and we'll spread the word and support as much as we can. So really good to see the power of community to help each other when they are going through this, and give them this comfort that you are not alone. We all are with you. So we are lucky to have Divya, and she has been a lovely member of the community, knows almost everybody. ये सबसे वो बहुत प्यार से बात करती है, हेल्प करती है सबको. एंड उसको मतलब when she was the Healing Circle speaker, we could see her fans. So yeah, all the good health to her, more power to her. So अभी circle में नहीं है, but I'm sure that our thoughts and our blessings are certainly reaching out to her. Absolutely. Yeah. So Amit, as we are coming to the end of this Healing Circle session, anything that you would want to share with everybody? Yeah. जो मैंने बोल दिया already बोल दिया है. Yeah, right. So we really touched and inspired by your journey of courage, positivity, and never give up attitude. So yeah, and I hope that we all learn from this, and because if you can, then certainly they can too. So thank you for sharing, and thanks to everybody, Rajendra ji, Gayatri ji, Mehul, and Radha auntie, Dilip Kumar ji, and everybody for sharing your experiences too. If there's anybody who wants to share anything, you can raise your hand. किसी को कुछ share करना है? Okay, perfect. So, Avni has raised her hand. Hi Avni, how are you? Hello. Hi Avni, how are you? Fine. Okay. मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल ही रहा है. हाँ. मैं अहमदाबाद से हूँ. मेरी एज 20 साल है. Okay. तो मुझे यही कहना था, जो भी अभी इस बीमारी से गुजर रहे हैं, कि उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए वो ये काम करें. मैं तो यही करती हूँ, तो वही शेयर करना चाहूंगी कि जो भी उन्हें काम करना पसंद है, जो भी पसंद है, वो काम में बिजी रहे. अपने बिल्कुल बिजी रखें, बस थकान ना हो. जैसे मुझे क्राफ्टिंग का बहुत शौक है और कुकिंग का है, तो जो मेरा मन करता है मैं अपने लिए कुकिंग करती हूँ, क्राफ्टिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड पूरा करती हूँ. अभी मेरा ऑपरेशन बाकी है. 6 अप्रैल को ऑपरेशन होना है. मुझे ब्रेस्ट कैंसर है 30 स्टेज का. All the best, all the best. थैंक यू. तो यही सब उन्हें करना चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए. लंबा टाइम है, निकल जाएगा आराम से. टाइम ही तो है, बीतना तो है ही. आप लोगों की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है. आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका सर्जरी प्लान है. और 8 कीमो मेरी हो चुकी है. और मैं अपनी कीमो में भी पूरा एक्टिव रही हूँ. आफ्टर 5 days, थोड़ा 5 days
रहता है, उसके बाद 15 डेज पर मेरी कीमो हुई है। राइट। अभी 10th मार्च को मेरी लास्ट कीमो फिनिश हुई है। अच्छा, ओके। और मुझे जेनेटिक कैंसर है एक्चुअली। मेरी मदर को भी सेम टाइम पे डायग्नोज हुआ है। अच्छा। अभी उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका भी सेम ब्रेस्ट कैंसर थर्ड स्टेज। ओके, दोनों का, आप दोनों को एक साथ में डायग्नोज हुआ है? दोनों का साथ में चल रहा है, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट साथ में ही खत्म होगा। अच्छा, अवनी मैंने आपसे ना यहाँ पे चैट में ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप का लिंक भेजा है, सो आई एम नॉट श्योर कि आप ऑलरेडी हैं ग्रुप में। अगर नहीं है तो आप अच्छा, आप इस आज मैं फर्स्ट टाइम जो मेरे हस्बैंड के पास आया था लिंक, तो उन्होंने सेंड किया। ओके, सो ये देन उनको लविस कैंसर का सपोर्ट ग्रुप है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे कैंसर वॉरियर्स, कैंसर कैरगिवर्स एंड सर्वाइवर्स है वहाँ पे। सो हम लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं, दूसरे को सपोर्ट देते हैं, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है कैंसर के रिगार्डिंग, सर्कल स्टेशंस के रिगार्डिंग वहाँ पे सब आती रहती है। सो आपके पास एक वर्चुअल ग्रुप हमेशा रहेगा। एंड आई लव योर स्माइल कि आप ट्रीटमेंट में जाने के बाद में भी अब यही कहते हैं मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी, सर्जन भी, और अभी जेनेटिक काउंसलर से मैं मिली थी कि आप हर टाइम स्माइल करते रहते हैं, वेरी गुड। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हर टाइम स्माइल करते रहते हो। मैंने कहा यस, मैं कहा तभी टाइम कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, बहुत लंबा टाइम है। राइट राइट राइट। वैसे ही मेरे 2 बेटे हैं, छोटा बेटा 2 साल का है मेरा। ओह, ओके। अनुराधा जी, मुझे तो नेहा की याद आ गई, सेम नेहा के जैसा ही है उनका। तो नेहा भी इंदौर से है, वो ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर है, और अभी मेरी दोनों ब्रेस्ट रिमूव होंगी एक साथ। अच्छा, और उसके कुछ टाइम बाद ये ओवरी भी रिमूव करनी पड़ेगी। ओ, आपको डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे और भी है, उसका भी सेम सिमिलर केस है, उसका भी ओवरी और सब कुछ रिमूव किया है, और ब्रेस्ट कैंसर है उसको भी। So you many more success stories, and hats off to your positivity, or smile, courage, keep spreading happiness. Yeah. Thank you, Avni, for being here with us and sharing your experience. Lots of power, lots of healing and good health to you. Thank you. Personally very very inspired by talking to you. Thank you. Yeah. Okay, so great. So with this, we come to end of this circle. Nisha, you wanted to share something. आपके लिए possible है क्या निशा अपना वीडियो शुरू करना? Okay, ठीक है, आप नहीं शुरू कर पा रहे तो I'm requesting you to unmute yourself. Hello, thank you डॉक्टर डिम्पल और अमित जी और मेवाड़ा जी। इन लोगों की भी मतलब स्टोरी सुन के और काफी मतलब मुझे खुद में अभी मतलब बहुत अच्छा उत्साह आया है। और अवनी जी, मैंने अभी शुरुआत में मतलब थोड़ा सा वीडियो इनका देखा था, ये लाइव थी, और फिर थोड़ी सी देर बाद, कुछ देर बाद इन्होंने अपना वीडियो शायद ऑफ कर दिया था। तो मैं खुद अभी मतलब ब्रेस्ट कैंसर से मतलब डायग्नोज हुआ है, मेरा सर्जरी हो गई है, और कीमोथेरेपी शायद मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होनी है। मैं खुद बहुत डर रही थी, पर रियली अम्मी जी आपको देखकर और मेरा मतलब है ना, बहुत कुछ मैंने अपने आप को चेंज कर दिया है कि नहीं ठीक है, मैं मतलब सब कुछ कर लूंगी और सब कुछ हो जाएगा। आपको मतलब ये मेरा वीडियो कैसे स्टार्ट वीडियो, हाँ मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है वीडियो शुरू करने का, बट ओके स्टार्ट माय वीडियो। यस, सी यू, थैंक यू। हाँ है ना, तो मैं मतलब है ना अभी 2-3 दिन से यही कह रही कैसे होगा, बट आज अभी आप लोगों के सबके मतलब ये सब देख के और ऐसा कि मतलब मैं तो बहुत छोटी सी बीमारी से मतलब पीड़ित हूँ अभी, और ऐसे आप लोग सब तो कितना बड़ा कुछ झेल गए हो, तो ये तो फिर मेरे लिए इतनी सी चीज है, मैं इससे आराम से मतलब बाहर निकल जाऊंगी। थैंक यू। और मुझे भी डिम्पल जी प्लीज, जो आपने ये एक लाइव पे जो ये भेजा है ना लिंक, मुझे भी उसको ज्वाइन करना है। राइट, सो निशा, आप ना लिंक क्लिक करके आप खुद ही ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक कर पा रहे हैं क्या? लिंक पे प्लीज दोबारा भेजिए। मतलब ये अगर मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल अभी देख रही थी और तुरंत उनके मोबाइल पर ये वाला मैसेज आया था, तो मैंने बस अपने मोबाइल पे मैसेज फॉरवर्ड किया और फिर 5 to 6 इसको कनेक्ट किया। गॉट इट। तो मैंने ना मैंने आपको दोबारा से लिंक भेजा है यहाँ पे, आप मुझे पर्सनल चैट पे जूम पे नंबर भी भेज सकते हैं अपना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी।
ओके। और मुझे अमित जी ने जो बुक का नाम बताया था वो भी मैंने आपको मैसेज किया था कि प्लीज दोबारा अमित जी वो वाली बुक का नाम बता दीजिए। You can heal yourself, Louisa Hay. अगेन प्लीज। You can heal yourself. ओके। You can heal yourself by Louise Hay. Yeah. Right. So मैं आपको ये भेज देती हूँ इसका नाम, यहाँ पे मैं चैट में लिख देती हूँ। ओके। हाँ, और तो हम लोग इस पे ग्रुप पे ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। शायद इसके मेरा ई बुक है मेरे पास में इनका, सो मैं वो ई बुक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और प्लीज आपका नंबर मिल सकता है क्या, जिससे मतलब मैं लिंक और ये वाला सब ले सके हम आपसे? ठीक है, आप नंबर जो वो है लवेज कैंसर का वो नोट कर लीजिए, 93729 93729 76783 76783 जी। मेरी सिस्टर भी मतलब ऑलरेडी कैंसर से है वो, और उनको भी हाल ही में मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है कि उसके हाथ में ना काफी सारी स्वेलिंग आ गई है, मतलब पूरा जैसे कि ये शोल्डर से लेके और पूरा आगे की फिंगर्स तक। गॉट इट। ठीक है, तो आप मुझे इसमें व्हाट्सएप मैसेज एक बार कर दीजिए, फिर मैं आपसे 1-on-1 कनेक्ट कर लेती हूँ, है ना? और आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर लूंगी। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू Nisha, and all the best for your next chemo cycle, and I'm sure you will do great. Yeah. I can already see your positivity. Yeah, thank you. क्योंकि मेरा ये पहला अनुभव रहेगा। बिल्कुल। हाय अम्मी, लास्ट रहे, भगवान करे लास्ट रहे। हाय अम्मी जी का भी नंबर मिल सकता है क्या? हाँ जी, मेरा अम्मी जी का नंबर? हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है। तो आप एक काम करिए, ये अम्मी आप मुझे मैंने अभी ग्रुप ज्वाइन किया है। ग्रेट, तो फिर मैं आपको इनका नंबर दे दूंगी। ओके, मुझे ये शेयर करना था कि जैसे फर्स्ट कीमो में के बाद 15 दिन बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे पहले से ही पता था कि बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने खुद ही ट्रिम कर दिए थे। वाओ, ओके। हाँ, ये पता है, मैं भी सोच रही थी, असल में मेरा खुद का पार्लर है। धीरे झड़ते हैं वो, जब देखो ना कि धीरे धीरे झड़ते हैं वो ज्यादा दुख देते हैं। और दूसरा ये है कि जब झड़ते हैं तो प्यार खत्म हो जाता है, उनकी केयर क्यों करनी जब जाना ही है तो। मैं खुद भी पता है कल यही सोच रही थी कि मंडे या ट्यूसडे मुझे जाना है, तो कल हेयर वॉश करके और क्यों ना मैं भी एक बार हेयर कट करवा लूं, क्योंकि वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा पेनफुल होता है। इससे अच्छा वो जगह जगह पड़े मिले, उससे अच्छा कि खुद ही ट्रिम कर दीजिए। Great, good tips for people who are struggling कि मैं कटवाऊं या नहीं कटवाऊं। Great, so we would लास्ट तक जाते जाते वो धीरे धीरे जाते हैं, वो ज्यादा पेनफुल होते हैं कि हम कपड़ा ढके ना ढके। मैं अभी ढका हुआ है, मैं घर में ऐसे ही घूमती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है अपने को, दूसरा क्या सोचते हैं मुझे मतलब नहीं है। सही है। Okay, so we are coming to अपने को गर्मी लगती है। सही, so हम लोग अभी सर्कल के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। सॉरी फॉर टेकिंग 10 minutes more. We would quickly hear from Dilip ji and Deepak ji, and then we would be closing the circle. Yes, Dilip ji, please tell me. Yes. See, first of all, Nisha ji, आप मैं आपको यू कैन हील योर लाइफ में आपको उसकी बुक में आपको भेज दूंगा। आप मुझे आपका एड्रेस भेज दीजिएगा। दैट इज वन थिंग, बिकॉज आई ऑलवेज डू दिस। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, कैंसर सो व्हाट, कैंसर सो व्हाट, ओवरकम इट। इफ इतने सारे लोग अगर कैंसर से डील करके इतनी अच्छी क्वालिटी लाइफ जीते हैं तो फिर हमको कोई इश्यू नहीं है। आप एक चीज समझिए, कैंसर इज अ ब्लेसिंग, और वो जो है कैंसर के बाद में जो जिंदगी मिलती है ना, उस जिंदगी को आप एक क्वालिटी लाइफ जियोगे। मैं जब भी काउंसलिंग करता हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कोई डॉक्टर या भगवान भी आपको कोई गारंटी नहीं देता है, बट मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। आप मेरे से बात कर लो, मेरी काउंसलिंग सुन लो, उसके बाद में अगर आप जीना चाहते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप क्वालिटी लाइफ जियोगे। जो मैं कहता हूँ उस प्रकार से आप जियोगे तो यू विल लिव अ क्वालिटी लाइफ। जितनी भी लाइफ आपकी बची हुई है, डेस्टिनी एक अलग बात है, राइट? यस सर। So this is what I would like to conclude with this. Cancer, so what? Yeah, thank you. Okay. तो क्या ये ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद सर का नंबर भी मिल जाएगा? जी निशा जी, I will share with you.
Yes, yes. Okay, thank you. दीपक जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी निशा जी, तो आप सर। बोल रहे हैं ना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, हाँ आपके जी। हेयर इतने अच्छे हैं कि अभी आप डोनेट कर दीजिए, आप कटवाइए मत, डोनेट कीजिए इस टाइम पहले, हाँ, और तो उसके ये बाद भी में मैं केमो कर- के लिए जाइए। ओके। Yeah, हाँ, ये good भी कैसे idea. हो सकता है? बहुत ये ऐसा ट्रस्ट है, वहाँ पर आपको डोनेट कर सकते हैं, ये कैंसर पेशेंट के लिए। अनुराधा जी भी ग्रुप में है और काफी लोग हैं जिन्होंने जिन्हें पता है कि कहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, तो आई थिंक ग्रुप विल गिव यू आंसर्स टू ऑल द क्वेरीज. ओके मैडम। Perfect. तो ये हाँ, तो ये आपका जो नंबर है वो मैंने नोट कर लिया है। मैं आपका आप नंबर इसको सेव WhatsApp करके कर आपको दीजिए. हाई मैसेज भेज देती हूँ, ठीक फिर है. आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको कल या परसों में ही मतलब हेयर कट करके, असल में मेरा खुद का ही पार्लर है। ओके, ग्रेट. वेरी गुड। ओके, फिर तो आप ऑटो आप कट करके भी आप बाद में डोनेट कर सकते हैं। या ग्रेट. यस Thank you. थैंक यू Thank you. Great, so beautiful circle, and very glad to host this on this platform. And thanks to Amit for bringing like-minded people together. Thanks to everybody for joining hands to guide each other. एक दूसरे का को डायरेक्शन देने के लिए, इंस्पिरेशन बनने के लिए, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, होप देने के लिए. एंड इसका हर एक स्टोरी का जो रिपल इफेक्ट्स होते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड हर सैटरडे एक नया एक्साइटमेंट होता है कि आज क्या जर्नी से क्या सीखने को मिलेगा. एंड हमें तो सीखने को मिलता ही है, उसके साथ में देयर आर मेनी अदर्स हु वॉच दिस ऑन यूट्यूब पे, सपोर्ट ग्रुप्स में, फेसबुक पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, एंड इट ऑलवेज इंस्पायर देम. एंड हमेशा कभी कभी दूसरे कैंसर्स के लिए रिक्वेस्ट आती है कि डू यू नो एनीबडी हु हैज सर्वाइव्ड एक्स टाइप ऑफ कैंसर, वाई टाइप ऑफ कैंसर. सो वेरी वेरी ग्लैड टू be that medium to spread this to the thousands of people who are looking for it. And thanks to each one of you to make this happen. And we look forward to hosting you again in the next Healing Circle Talks on Saturday. And thanks Amit once again. Thank you ma'am. Thank you ma'am. My pleasure to interact with everyone and share my story. Thank you. Bye. Thank you very much ma'am. Thanks all. Bye.